मैम वो लाइव भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्डेड। हेलो हेलो मैम अनूप। हाँ अनूप अनूप हाँ मैं जी मैम। सुनाई आ रही हूँ क्लियरली? हाँ जी आ रही है। ठीक है, आवाज ठीक है ना? मैं आवाज और बढ़ाऊं क्या? हाँ अगर पॉसिबल है तो बढ़ा दीजिए मैम थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ ठीक है। मेरे को ये पूछना था मैम, कुछ भी यहाँ से प्ले होने से पहले आप मुझे कोई क्यू देंगे ना? कैसे क्लू दूंगी? मतलब जैसे आपका ये ई सोविनियर वगैरह है, रिलीज होना है तो कोई बोलेगा ना कि नाउ आई विल शो ई सोविनियर या लॉन्च ई सोविनियर, ऐसा कुछ? हाँ देखो, मैंने एक वो पहुंचाया है व्हाट्सएप पे, जो कंट्रोल रूम पर मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट पहुंचाया है ना? हाँ। उसके बाद एक एजेंडा आया था, उसमें थोड़े से चेंजेस हुए थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, टाइमिंग से चेंज हुआ है। नहीं उसमें पहले ये था ना मैम, जो पहले वाला एजेंडा था उसमें ई सोविनियर बाद में था। मैम दीपक दिस साइड। मैम कैन वी टॉक ऑन फोन मैम? यस 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 मैम, इट्स गोइंग लाइव। सिलेंडर के पास तो वापस आ जाए उसको लाइव जा।
प्रणय स्टे करिए, प्रणय स्टे करिए, प्रणय। अच्छा, ये अपने के एस सचदेवा। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। अभी आ जाएंगे। और वीके अरोरा तो ले लो, ठीक है। हाँ, सलील भार्गव सर दिख रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है, ये हो गए। और मिनिस्टर साहब आ गए, मेरे ख्याल से बस यही लोग हैं यहाँ। नहीं, एक जना और है, कोई डीन आ गए, डीन को अपने लिए है। डीन सर ठीक है। नहीं, ये यहाँ शेयर स्क्रीन आ रही है मुझे। जो आ रहा है स्क्रीन पे दिख कौन देख तो रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स क्लिक करो। सर गुड इवनिंग, आपकी आवाज साफ आ रही है सर। बस आप थोड़ा सा 10 मिनट में चालू होगा प्रोग्राम। आप तो माइक अनम्यूट करना प्रणय, जब भी सर बोलेंगे। हाँ सर। हाँ, हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, एकदम साफ आवाज आ रही है आवाज, ठीक आ रही है सर। जब आप नहीं बोलेंगे तब म्यूट कर दीजिएगा आपके माइक को बस। ठीक है। प्रणय अभी म्यूट कर देना सर के आवाज माइक को। उस टाइम जब बोलेंगे तब अनम्यूट जरूर करना। जी सर जी। ये ध्यान रखना, बाकी टाइम म्यूट करके रखना। हाँ सर। थैंक यू। बस हम सब ज्वाइन करके चालू कर रहे हैं। कर लिया।
गुड इवनिंग राहुल। हाँ संगीता, वीडियोस और फोटोज बनाते जाना, है ना, ध्यान से जी। जरा अरोरा साहब को और इनको चेक करो, ये दोनों दिख नहीं रहे, सचदेव और अरोरा सर। डॉक्टर प्रवीण अमीन। हेलो, एक बड़ा नाम है डॉक्टर। हेलो सर। 13 तारीख को हाँ राहुल सर, द वॉइस इज क्लियर सर। हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर। And sir, the video is also clear, sir. Sir, the minister is all set, sir. Minister sir is all set. He is already. He will join dot on 6:30, sir. Is everything ready, sir? Bhargav sir. Yeah, it's already. Give us 5 minutes. Give us 5 minutes, Rahul. Sir. मैं जब बोलूंगा तब सर को बुलाइएगा। सर मैं सर की तरफ ले जाऊंगा, सर तो पूरी तरह से सेट है। हाँ मैं बताता हूँ जैसे स्टार्ट करेंगे आप उनको इनवाइट करेंगे एंड देन आई विल पुट इट। ठीक है। And sir, just let me know when to start. मैं बताता हूँ आपको। या संगीता डीन सर को कॉल करेंगी? हाँ सर, करती हूँ सर।
दीपक की सचदेवा साहब का भी नंबर भेजा, ये भी नहीं आ पाया यार, इनको भी लो और दोनों को ले लो, इनको और यार कुलदीप सचदेवा साहब को भी लो जरा सा, है ना, वो भी रह गए। हाँ फटाफट देना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. The number you have dialed is currently busy. Please try later. Sir is all set. Please give 5 minutes सर। राहुल 5 मिनट प्लीज। ठीक सर जी, मैं आपको इनवाइट कर लूंगा। सर बोल रहे हैं मैं लाइन पे हूँ। दीक्षित सर कौन से बोलेगा वीडियो ऑन करें? क्या ना एक बार वीडियो ऑन करिए। डॉक्टर संजय दीक्षित सर, आपका वीडियो ऑन करके प्लीज एक बार हेलो कर लीजिए। डीन सर, कैन यू हियर मी? या प्लीज, थैंक यू। या नाउ बी क्लियर। और आप लोग जब आप लोग नहीं बोलेंगे तब सर अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा बस, दैट इज द ओनली सिंपल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सचदेवा, गुड इवनिंग सर। आ गए सर? और सर सचदेवा सर आ गए क्या सर? आगे मैंने अभी देखे थे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या सर, मिनिस्टर सर इज ऑलरेडी देयर। We will start sharp at 6:30. I think everybody is there. Yes, sir. Yeah. Neha, you can start after 2 minutes. After 2 minutes, you will start. Yes, sir. First, you will invite Minister sir. Yes, sir. To please take his seats, and then we will start. Okay, Good evening, sir. everybody. So My that simple request is that who is not using mic, please mute it wherever you are not using it, and please unmute it when you are using it. Thank you. So I'll have to invite Dr. Vishwas Sarang sir to take his seat. Dr. Vishwas Sarang sir. Yes. Shri Vishwas Sarang ji. Yes, sir. Please. करो भाई करो। डॉक्टर सचदेवा जी, आप अपना ऑन कर लो, नहीं तो हमें घबराहट हो जाती है। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। या ने आप चालू कर सकती हैं। Yes, sir. Good evening, everyone. First of all, I'll request Dr. Vishwas Kailash Sarang sir to kindly take his seat. Om Asto Ma Sadgamaya, Tamso Ma Jyotirgamaya, Mrityor Ma Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. O Lord, lead us from the unreal to the real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality of knowledge. Welcome you all to the world of knowledge. Welcome you all to the 75th Platinum Jubilee of National Conference of Tuberculosis and Chest Disease, NatCon 2020. Social gatherings and get-togethers are a barrier due to COVID pandemic today, but scientific deliberations and advancements through exchange of knowledge must go on. This virtual meeting is actually a blessing in disguise, as now we have the legends from all over the world to share their knowledge. Welcome you all to this 3-day conference on a 3D virtual platform where experts in the field of tuberculosis, chest disease, and COVID-19 will share their knowledge for the fight against COVID-19 and tuberculosis, with the ultimate goal towards eliminating tuberculosis from India by 2025. This conference is being organized under the aegis of Tuberculosis Association of India, Mahatma Gandhi Memorial Medical College Indore, MP-TB Association, and Indian Medical Association. I welcome our chief guest, Minister of Health and Family Welfare, Honorable Dr. Harshvardhan sir,
I welcome our guest of honor, Minister of Medical Education, Madhya Pradesh, Honorable Dr. Vishwas Kailash Sarangji, Director General Health Services, Government of India, Professor Dr. Sunil Kumar, President of NATCON 2020, Dr. K.S. Sachdeva, Vice Chairman, Tuberculosis Association of India, Dr. V.K. Arora, Dean of the Host Institute, MGM Medical College, Indore, Dr. Sanjay Dikshit, Chairman, NATCON 2020, Dr. Ashok Bajpai, Organizing Secretary, NATCON 2020, Dr. Salil Bhargav. It's my pleasure to invite all these esteemed dignitaries for the inaugural ceremony. Moving forward, now I take this honor to welcome respected Dr. Ashok Bajpai, our beloved teacher and the organizing chairman of NATCON 2020 for the welcome address. Sir, please. Good evening, everybody. We are welcoming here in Indore at the occasion of this National Congress, and I hope everybody has joined. And because of this pandemic, we have organized a virtual conference, and which is first time in the history of any conference. And this will be a digital conference organized, and every matter will be discussed in due course of time. As all of us know that this COVID-19 has changed the whole world scenario about the diseases, and especially a disease which was neglected for so many years. Infectious diseases has been neglected for so many years in the medical field. Everybody was working in cardiology, neurology, in every branch, but our infectious diseases were neglected. I still remember when I joined in '74, everybody told me that why you are joining this branch, because there was no treatment available, and same thing was existing for last 35 to 40 years. But I think because of our dynamic and Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the scenario has changed from 2018 to till today. This medical college has now postgraduate students. We have got advanced equipment. We have got critical care, and everything is available. And whatever we demand is being supplied by state government and by the central government. And especially we have got a dynamic superintendent and dean, Sanjay Dikshit and Salil Bhargav, and they are working very hard. And I am sure with their team, this conference will be a great success, and everybody will enjoy this conference. Thank you to everybody. Thank you, Dr. Ashok Bajpai. We pray, we bow to Goddess Saraswati, our goddess of knowledge, music, speech, and seek her blessings by lighting the lamp of knowledge and wisdom, the lamp of prosperity. I request to kindly play. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shatru buddhi vinashaya deepajyotir namostute. Deepajyotir namostute. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanah. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanah. Deepo hartu me papam. Sandhyadeepa namostute. O deepa brahma rupastham. Jyotisham prabhuravyayah. O deepa brahma rupastham. Jyotisham prabhuravyayah. Arogyam dehi putrauscha. Matim swachhami me sada. Praverastam samarabhya. Yavat suryodayo bhavet. Praverastam samarabhya. Yavat suryodayo bhavet. Yasya dishte gruhe deepa. Tasya nasti daridrata. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada.
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम्. Thank you. Let's start further. Go ahead with the inauguration ceremony. It's my privilege to welcome one of the most dedicated doctor, a powerful administrator, and accomplished expert in community medicine and public health, the present Dean of Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore, Dr. Sanjay Dixit. I request Dr. Sanjay Dixit to kindly come forward and address the audience. Thank you, Sangeeta. First of all, I extend my warm regards to our Minister Shri Vishwas Sarangi, who is here as a guest of this conference. I am overwhelming privileged to welcome all the learned delegates in 75th Platinum Jubilee of National Conference of Tuberculosis and Chest Disease in COVID era on 3D virtual platform. In the present pandemic scenario, pulmonary experts can be regarded as a pivot commandos around which all other fraternity warriors are facing the comet. I applaud the unparalleled, courageous and dedicated efforts of all the pulmonologists in this pandemic crisis. Considering current virus pandemic situation, the association has decided to organize it virtually on a 3D platform. This is an inspiring step for all others aspirants who are seeking to organize academic event in near future. As a head of the institution of MDM Medical College Indore, I extend all my support for organizing this intellectual event. On behalf of all my faculties of this institution, I congratulate organizer and wish all the best for all the delegates for a successful and fruitful events. With regards. Thank you, Dr. Sanjay Dixit. I take pleasure to invite Honorable Minister, Government of Madhya Pradesh, Medical Education, Bhopal Gas Tragedy, Relief and Rehabilitation, Honorable Dr. Vishwas Kailash Sarangi, to kindly address the inaugural event. Under his able leadership, the medical colleges of Madhya Pradesh have advanced with better infrastructure, resources, and diagnostic facilities, aiming to provide state-of-art healthcare. Sir, kindly enlighten us with a few words. नमस्कार, मैं सबसे पहले तो संचालन कर रही बहन को कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर्स के बीच में रहता हूँ, पर सो काइंड ऑफ यू कि आपने मुझे ये ओहदे से संबोधित किया। प्लेटिनम जुबली कॉन्फ्रेंस ट्यूबरक्लोसिस और चेस्ट डिजीज के अवसर पर उपस्थित हमारे देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय डॉक्टर वाजपेयी जी, आदरणीय डॉक्टर संजय दीक्षित जी, आदरणीय डॉक्टर के.एस. सचदेवा जी, अरोड़ा साहब, डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी, डॉक्टर राहुल रोखले जी, और इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश में वर्चुअली उपस्थित सभी डॉक्टर्स, मैं बहुत बधाई दूंगा ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और ट्यूबरक्लोसिस की बात हो, चेस्ट डिजीज की बात हो, और वो यदि कोविड के समय पर हो तो उससे और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आज के इस दौर में पूरी दुनिया कोविड से जिस प्रकार से पीड़ित है, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब भी वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर पूरी दुनिया में बहुत चिंता है, और इसीलिए 2030 का टारगेट दिया है WHO ने कि टीबी को हम पूरी तरह से ख़त्म करें। पर जैसा डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि 2018 के बाद जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन के रूप में जिस प्रकार के टीबी के उन्मूलन के लिए काम किया, और उन्होंने
देश में टारगेट दिया है कि 2025 तक हम हिंदुस्तान को पूरी तरह से ट्यूबरकुलोसिस फ्री करेंगे। क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर दवे ने एक बात और बताई कि पूरी दुनिया का 1/3 यदि हम इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की बात करें तो वो हिंदुस्तान में ही रहते हैं। तो यदि हिंदुस्तान इसको लीड करता है तो निश्चित रूप से दुनिया में इस बीमारी की रोकथाम के लिए एक बड़ा योगदान होगा। और इसी लक्ष्य को लेकर केंद्र की सरकार बहुत ताकत के साथ काम कर रही है। और उसी पूरे आंदोलन में कदम ताल करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। पिछले यदि हम 2019 की बात करें तो हमने लगभग 1,87,000 टीबी मरीजों का इलाज किया और उसमें भी जो टीबी की दवाओं से रेजिस्टेंट थे लगभग 4,000 मरीजों का हमने सफलतापूर्वक इलाज किया। और उसमें मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने यदि हम ऑन एन एवरेज बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर पेशेंट खर्च किया। ये इस बात को इंगित करता है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी डॉक्टर्स आते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, नए अनुसंधान, नई रिसर्च के बारे में बातचीत होती है, तो निश्चित रूप से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दौर में भी आपने वर्चुअली भी इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके माध्यम से इस भीषण बीमारी के संकट से निपटने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2025 में हम एंड टीबी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से टीबी को खत्म करेंगे। और टीबी हम सबको लिए ऐसा टारगेट खत्म करने का ऐसा टारगेट आगे लेकर हम चलेंगे कि जिससे निश्चित रूप से हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। मैंने जैसा कहा कि कोविड का दौर है और कोविड के इस पूरे संकट में यदि पूरी दुनिया की स्टडी कहती है तो कोविड वायरस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा चेस्ट पर होता है। और जब चेस्ट की बात होती है तो इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो लगातार कोविड की चिंता भी कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कोविड को लेकर बहुत ताकत के साथ काम किया है। मुझे यहाँ इंगित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार कोविड संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार को मुस्तैदी के साथ खड़ा रखा है। लगभग रोज माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा बैठक करते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि जब कोविड की शुरुआत हुई थी और हम सरकार में आए थे उस समय मध्य प्रदेश में केवल 60 लोगों का कोविड टेस्ट करने की हमारी कैपेसिटी थी। आज हम लगभग 35,000 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। आज बाकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर हम ताकत के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हम कोविड के इलाज को सुचारू रूप से कर रहे हैं और हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से वैक्सीन आएगी, ऐसी हमें आशा है। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं कि वैक्सीन के मामले में भी हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने काम किया है और हम जो देख रहे हैं ट्रायल, बहुत सारे वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल भी शुरू हो गया है। हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज में ट्रायल शुरू हुआ है। और केवल कोरोना का इलाज तो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है ही, उसके साथ साथ वैक्सीन बनाना भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और उसके साथ साथ वैक्सीन को लगाने की पूरी जिम्मेदारी लेना भी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसीलिए केंद्र की सरकार ने जो निर्देश दिए थे कोल्ड चेन को डेवलप करना, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोल्ड चेन डेवलप की है। जैसे ही वैक्सीन आती है और हम निश्चित रूप से इसको नीचे तक लगाने में सफल रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। जहाँ तक आज के युग में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात है, आजकल आईटी का ज़माना है और लगातार आईटी के माध्यम से, चाहे वह टेलीमेडिसिन का मामला हो, चाहे बाकी साधन संसाधन के माध्यम से हम बीमारी को
निदान अच्छे से कर सकते हैं। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी हम टीबी का इलाज कर सकें, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। आगे आने वाले समय में हमारा लक्ष्य यही है कि हम रीचिंग द अनरीच्ड इस स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे और वो व्यक्ति जो कि टीबी से पीड़ित है परंतु वो उस स्थान पर है जहां पर डॉक्टर की एबिलिटी नहीं है, तो हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसका इलाज करेंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि निक्षय सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्र की सरकार भी बहुत मुस्तैदी के साथ इस पूरे टीबी के मरीजों की के बारे में और इस बीमारी के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में भी हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम आगे आने वाले समय में मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है उसको पूरा करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं ये जरूर संकल्प लेना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य दिया है उसको हम पूरा करेंगे। आगे आने वाले समय में हमने हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक निर्णय और लिया है और मुझे लगता है यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उस मेरे इस निर्णय को का स्वागत भी करेंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि आज तक हिंदुस्तान में जब भी आपकी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसका जो ऑर्गेनाइजर होता है वो पर्टिकुलर किसी विंग की एसोसिएशन होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसका आयोजन करता है। हमने मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से ये निर्णय लिया है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हम हमारे बैनर से मध्य प्रदेश सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग भी आयोजित करेगा। शायद देश में ये पहली बार होगा और इसके पीछे का हमारा उद्देश्य यही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का जो मुख्य लक्ष्य है वो डॉक्टर्स का निर्माण करना है, अच्छी चिकित्सा शिक्षा स्टूडेंट्स को मिल सके, उसका वो हमारा पूरा तरह से लक्ष्य है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने हॉस्पिटल को बहुत अच्छा रन करें जहां पर हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, पर उसके साथ साथ R&D हमारा एक बड़ा सब्जेक्ट है। और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि R&D को लेकर जितना काम होना चाहिए शायद उतना काम नहीं हो पाया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से साध नहीं सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कॉन्फ्रेंसेज होना जिसमें कि एक मंच पर आकर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की स्टडी को हम शेयर करते हैं, नए अनुसंधानों पर बातचीत करते हैं, नए रिसर्च के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसलिए हमने अपनी सरकार में ये निर्णय लिया है कि आगे आने वाले समय में हम शायद प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर 2021 में हम इसकी शुरुआत करेंगे और 2021 में हम मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उसमें देश भर के, दुनिया भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाकर एक दूसरे के साथ जुड़कर किसी भी समस्या के हल के लिए हम एक लक्ष्य के साथ चले, इसका हम प्रयास करेंगे। मैं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। इस संगोष्ठी के आयोजन में लगे हुए गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदौर के मेडिसिन विभाग, मध्य प्रदेश की टीबी एसोसिएशन को और देश की टीबी एसोसिएशन को मैं बहुत बधाई देता हूं और इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे भी जुड़ने का मौका दिया। हम सब मिलकर कटिबद्ध हैं। कहा जाता है, हमारे यहाँ आदि अनादि काल से कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण यदि समाज का हमें निर्माण करना है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संस्कारित नागरिकों का निर्माण करें। पर संस्कारित नागरिक बिना स्वास्थ्य के नहीं बन सकता। यदि हमें समाज को ठीक राह पर पहुंचाना है तो हमें दो एस्पेक्ट पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है कि हम स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करें। निरोगी काया हमारे यहाँ सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है। तो व्यक्ति निरोगी हो, व्यक्ति स्वस्थ हो। यदि व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में सकारात्मकता लानी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को स्वस्थ होना पड़ेगा। और यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा और उसके बाद यदि समाज का सही निर्माण करना है तो हमें उसको संस्कारित करना होगा। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और हमारा ये विभाग दोनों ही आयामों को छूता है। जहां हम शिक्षा, डॉक्टर के निर्माण में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो उस शिक्षा के माध्यम से हम
समाज के में संस्कार की बात करते हैं और उसी के माध्यम से हम स्वास्थ्य के पहलू पर भी ध्यान देते हैं। तो हमारा विभाग समाज के निर्माण में दोनों पहलुओं पर काम करता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर आपके बीच में मुखातिब होने का, बोलने का मौका दिया। हम सब मिलकर एक सशक्त समाज का निर्माण करें, एक शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। और ये बात सही है कि उस निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इस देश का हर एक नागरिक स्वस्थ हो, सकारात्मक हो, संस्कारित हो। और उसके लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम सब लगकर इस काम को करें। मेरा मानना है कि मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर्स, मुझे वैसे भी आजकल ये कहा जाता है, मेरे पास में लोकेंद्र दवे जी बैठे हैं स्क्रीन पर, डॉक्टर रोकड़े को भी दिखा देता हूँ मैं एक बारी। डॉक्टर रोकड़े भी है। तो मेरे को तो वैसे भी ये कहा जाता है कि मैं प्रो डॉक्टर अप्रोच वाला आदमी हूँ, कि मैं डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा संरक्षण देता हूँ। और उसके पीछे का मेरा भाव यह है कि समाज में मेरे घर के ऑफिस में पीछे लिखा हुआ है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है कि इस जहां में, इस पृथ्वी पर कोई भी आया है तो इट इज ऑल प्रिस्क्राइब्ड। जैसे आप डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऐसा भगवान ने सबका प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजा है कि कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, कब करेगा। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर से बड़ा सौभाग्य किसी और का नहीं है कि भगवान ने आपको, जिस भगवान ने लोगों को इस जहां में जान देकर भेजा है, उस जान की हिफाजत करने का काम भगवान ने आप डॉक्टर्स को सौंपा है। तो मेरा मानना है कि आपसे बड़ा सौभाग्य इस दुनिया में और किसी का नहीं है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ तो आदि अनादिकाल से है कि किसी गांव में यदि गांव को चलाने का काम किसी के पास होता था, गांव में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की होती थी, तो उस गांव में रहने वाले पुरोहित की, उस गांव में रहने वाले शिक्षक की और उस गांव में रहने वाले वैद्य की। ये कहा जाता था कि ये तीन लोग पूरे गांव की दिशा को और उसकी दशा को बदलते भी हैं और ठीक भी करते हैं। तो मेरा मानना है कि समाज में डॉक्टर एक ऐसा वर्ग है जो कि समाज को स्वस्थ रखने में अपना सर्वस्व लगाता है। तो मेरा मानना है कि जैसा मैंने कहा कि भगवान ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजा, भगवान ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप ये काम करें, मैं दूसरा काम करूं, कोई तीसरा काम करे। भगवान ने आपको सबसे बड़ा सौभाग्य दिया है कि आप अपने माध्यम से लोगों को स्वस्थ करते हैं, बीमारों को इलाज देते हैं। मरीज जिसको सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है उसको इलाज के माध्यम से उसकी सेवा करते हैं। तो ये सौभाग्य आपको मिला है। मेरा ऐसा मानना है, मैं ये मानता हूँ कि हर डॉक्टर अपनी संपूर्ण लगाकर मरीजों का इलाज करता है। मैं आगे भी अपेक्षा करूंगा कि आपके माध्यम से ये समाज और स्वस्थ हो। डॉक्टर्स पूरी मैं ये नहीं कहूँगा मैं कि शिद्दत से काम नहीं करते, परंतु और शिद्दत से काम करें, जैसा मेरा मानना है आप सब करते ही है। और शिद्दत से काम करें और भगवान आपको सबको यश दे। भगवान धन्वंतरी की आप पर सब पर कृपा बने रहे। उर्दू में कहा जाता है कि आप सबके हाथ में शिफा हो। आप सब जिस मरीज को हाथ लगाएं वो ठीक हो जाए। मैं मजाक में बहुत बार कहता हूं, क्योंकि नेताओं के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में नेता हर जगह फिट हो जाता है। जैसा हर सब्जी में आलू होता है, वैसा हिंदुस्तान में नेता होता है। हर तरह के उद्घाटन में नेता को बुलाया जाता है। यदि कपड़े की दुकान का उद्घाटन है तो नेता, नाई की दुकान का उद्घाटन है तो नेता, रेस्टोरेंट का उद्घाटन है तो नेता, और हॉस्पिटल का उद्घाटन है तो नेता, कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन है तो नेता। तो मैं मजाक में कहता हूं कि भाई यदि हम किसी होटल के उद्घाटन में जाएं तो हम यही प्रार्थना करेंगे अपने भाषण में कि भाई आपकी होटल बहुत चले, आपके यहाँ बहुत सारे लोग आए। यदि किसी रेस्टोरेंट के उद्घाटन में हम जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि आपकी रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आए। किसी कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो हम ये कहेंगे बहुत सारे ग्राहक आए और बहुत सारा कपड़ा खरीदे। अब यदि हॉस्पिटल के उद्घाटन में हम जाकर ये भाषण दे दें कि आपके यहाँ बहुत सारे मरीज आए, तो हॉस्पिटल वाला तो खुश हो जाएगा, पर वोट देने वाला हमें अगली बार वोट नहीं देगा। तो मैं किसी हॉस्पिटल के उद्घाटन में जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जितने मरीज आए उतने ठीक होकर जाएं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी डॉक्टर को बहुत यश मिले, उनके हाथ में
ऐसी भगवान की कृपा हो, धन्वंतरी भगवान की कृपा हो कि आप बिना दवा के लोगों को ठीक करें, आप केवल हाथ लगाएं और मरीज ठीक हो जाए। ये मेरी शुभकामना है। भगवान आप सबको यश दे, आप सबको यशस्वी करे। हम सब मिलकर एक बड़े उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को जिए। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस राष्ट्र, इस समाज के लिए हम न्यौछावर करें। और जैसा मैंने कहा कि यदि डॉक्टर आप बन गए हैं तो निश्चित रूप से सेवा का आपको रोज मौका मिलता है। उस मौके को आप और बढ़ाते रहेंगे, समाज की सेवा करते हुए मरीजों का इलाज करते रहेंगे। आप सबके यशस्वी जीवन की मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद सर. Thank you very much, sir, for all your support and showing us a picture of our promising, bright and healthy future. Thank you, sir, for sparing your time out of your busy schedule for this program. Today, it's a matter of pride that under support and blessings of Honorable Vishwas Sarang ji, we release our e-souvenir of NatCon 2020, which is specially published celebrating the Platinum Jubilee of NatCon. Kindly present the e-souvenir. Thank you, Honorable Vishwas Sarang sir, for presenting this e-souvenir. We welcome now the President of NatCon 2020, Dr. K.S. Sachdeva. Dr. Sachdeva is the Deputy Director General TB, Central TB Division, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Dr. Sachdeva looks after the entire TB program of our whole nation. We welcome you, sir, to say a few words in this August gathering. Thank you. Honorable Minister Dr. Harshvardhan, Honorable Minister Shri Vishwas Sarang, other dignitaries, senior colleagues, my dear friends, a very good evening to all of you. As a President of NatCon 2020, it is my privilege and honor to welcome you to the Platinum Jubilee celebration of the 75th National Conference of TB and Chest Diseases. This year's event is unprecedented in more ways than one. Firstly, we are holding this entire event virtually and online. Secondly, the event is being held during a ravaging COVID-19 pandemic. The pandemic has laid unprecedented challenges before us, both as citizens as well as public health professionals and policymakers. In fact, we are at the cusp of reinventing and rewriting the playbook on how pandemics are going to be managed in near future. This, to my mind, is both exhilarating opportunity as well as a daunting task. I believe it is also an enormous privilege as a public health professional to witness and contribute in our own ways to understanding of this global health crisis situation and manage it for effective outcomes. I'm sure this event is going to be an enormously enriching experience with distillation of knowledge and wisdom from the scientific community, public health professionals and policymakers who have congregated here and attending the 3-day online event. Indeed, the learnings will be both enlightening and the deliberations will be equally engaging for all of us. Hope you all are looking forward to it as much as I do. Significantly, COVID-19 pandemic has taught us valuable lessons. And as the saying goes, every crisis brings with it a unique opportunity. This crisis has amply proved that if we could all join force and come together to overcome COVID-19, then what stops us from hoping to achieve victory over TB in the next few years?
As is evident, a massive social re-engineering is taking place globally. The public discourse on health has now taken the center stage. The COVID pandemic has put strenuously to test the health infrastructure and system. Be it in developed or developing countries, COVID-19, therefore, is a watershed moment for the public health in the country on two counts. Firstly, there is a heightened public awareness among common men today ever before on the communicable diseases. COVID-19 is highly contagious nature have created a huge health-related risk perception among the public. However, other diseases have been silently claiming more lives annually than in our country, yet the awareness and sensitization regarding them are underwhelming. For instance, TB suffers from complete invisibilization. If we can stop COVID in its tracks in such a short time, undoubtedly we can stop TB too with the same set of resolute determination and concerted efforts. Due to COVID-19 pandemic, the public is highly receptive now more than ever before to receive risk communication and health messages. There is a fundamental shift in the perception of one's vulnerability among the masses, both individually as well as collectively, cutting across the rich and the poor divide. The pandemic has jolted the public into seeking steps for health and wellness. I would like to add here that while focus predominantly remains on communicable diseases, non-communicable diseases should not be neglected and put on the back burner. We need to advocate about these as public health professionals and as health program managers in the country, and we have to actively evolve and strengthen them further. The COVID-19 pandemic has also given an entry point to structurally reimagine our core public health delivery systems, more so in the context of respiratory infections and importantly when you have an ambitious goal of ending TB by 2025. The National TB Elimination Program under the Ministry of Health and Family Welfare has taken several steps in that direction and that have the potential to become the new normal. The national innovations such as doorstep delivery of drugs to TB patients, teleconsultations, active screening of TB through outreach activities in response to the pandemic have proved to be a boon for many patients. During the lockdown, who struggled to access public stroke private healthcare. The program in collaboration with states is ensuring minimal visits to health facilities by patients who are on treatment by providing sufficient drugs required for more than a month, as well as using digital innovations to monitor treatment adherence. All this is to ensure that there is no inconvenience and interruption in their treatment. This is a paradigm shifting opportunity in health delivery system in the country and can become more than a norm than an exception. The overall public health system is getting an uplift to ensure they are compliant with airborne infection control measures and the frontline health workers getting used to such newer protocols. Extending the doorstep delivery further, the program is going to doorstep of patients to collect the samples to aid in early detection, diagnosis, and initiation of treatment. It exemplifies the program's resolve for the last mile access and quality care delivery. Extensive contact tracing, isolation facilities, sanitoria are again coming back in the vogue thanks to their efficacy and practicality in containing the community level spread and pandemic situations. We are also observing that from a mere patient-centric approach, the system will need strengthening around community-centric health approaches. The social and environmental determinants need to be addressed in the process. Disease surveillance and enforcing public health regulations will become rigorous and not remain a matter of individual choice. Despite the challenges posed by COVID-19, TB program has bounced back. There is an unprecedented focus and momentum to end TB. India is making rapid strides to achieve this goal by 2025, 5 years ahead of the global pandemic.
We have introduced several mitigative measures, including bidirectional screening for TB and COVID and convergence and case finding efforts for TB COVID in the country. I would like to highlight several policy reforms made in the last 3 years. TB has been made a notifiable disease in the country. This has improved identification of TB cases and helped reduce the gap in identifying the missing cases in the country. 1 million missing cases were reported in 2017. It has been reduced to 250,000, roughly 2.5 lakh cases in 2019. Financial support is also being provided to all TB patients under Nikshay Poshan Yojana, a significant step to reduce out-of-pocket expenses for all patients and increase treatment adherence. Since April 2018, a total of 940 crore rupees have been disbursed to TB patients till date. In addition, free drugs, diagnostics are being provided to TB patients availing treatment in the private sector. The community plays a vital role and their participation is crucial for any public health program success. In view of that, we have created TB forums covering all districts in the country with an aim to provide a platform for all stakeholders, including patients groups, to voice their concerns and offer suggestions that can be integrated into the program. TB diagnostic and treatment capacities in the country have been ramped up. We have undertaken a massive expansion of diagnostic capacity and currently more than 21,000 microscopic centers are operational across the country. In the last 2 years, we have increased rapid molecular testing devices to more than 3,000 with at least one in every district of the country. National TB Elimination Program has incorporated latest evidence-based and injection-free regimen for drug-resistant TB as well as drug-sensitive TB. We have also introduced newer drugs with more than 15,000 patients having received delaminate and bedaquiline containing regimen from more than 700 drug-resistant TB centers spread across various parts of the country. Moreover, the program is heavily investing in capacity building of frontline health workers to deliver quality care for effective program outcomes. There is an 18% increase and a 12% increase in TB case finding under National TB Elimination Program in 2018 and 2019, respectively. The government has heavily invested in TB research. The Indian Council of Medical Research and the India TB Research Consortium are jointly conducting next-generation research on diagnostics, therapeutics, vaccines, and other such critical areas. World's largest national TB prevalence survey with a massive sample size of 5 lakhs is underway in the country. It is a significant push towards TB elimination goal in the country. From an increased funding for TB, the discovery of newer drugs and diagnostic, increased access to health facilities, greater investment in research and expanded reach of public health education, seasoned with TB activism and media's proactive role, private sector participation to political advocacy and community engagement, coupled with vaccine trials, has renewed the hope of finding the elusive and miraculous breakthrough to end TB, and it seems goal is within the realms of possibility. The goal to end TB by the year 2025 may look daunting. However, the recent paradigm shift in the policy and drive of several states and union territories to move towards TB-free status through rigorous population-based vulnerability mapping and screening, coupled with active case finding, will substantially yield results and act as a driving force and will add to the momentum towards ending TB in the country. In the end, I would like to congratulate the entire organizing team behind the event for creating this platform. Also, as you are probably aware, this year we are celebrating the Platinum Jubilee of the NATCON, and it has become a key annual calendar event in the country for bringing various medical professionals and experts in the field of tuberculosis, chest diseases under one umbrella for scientific deliberation, share knowledge and advancements with goal towards eliminating TB from India by 2025. I extend my warm wishes and congratulations to Tuberculosis Association of India, Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore,
Madhya Pradesh TB Association for putting this event together and bringing a galaxy of voices to enrich and enlighten the discourse surrounding the TB and chest diseases and provide leadership in the country. Thanks for this invitation, and I look forward to deliberations of this workshop. Thank you. Thank you, Dr. Sachdeva. Now, we still hope and feel that with all these work, planning and policies, India will be successful in defeating tuberculosis soon. Soon, tuberculosis will move from the present to the past. Thank you, sir. Time has come for the announcement of the prestigious awards and orations. It's my pleasure to welcome Dr. V.K. Arora for same. Dr. V.K. Arora is the Vice Chairman, Publication and Research, Trustee and Executive Editor of Tuberculosis Journal of India, Tuberculosis Association of India. Dr. Arora has toiled hard behind the success of this conference. He is not only the chief leading force behind this NatCon, but he has been the backbone for several past national conferences of tuberculosis and chest diseases. I invite Dr. Arora for declaration of our prestigious awards and orations. Thank you. Thank you, Neha, for inviting me to announce the awards. Dignitaries on this virtual day platform, delegates and dear friends. It's my pleasure to announce the awards on this occasion to those people who have been doing eminent work in TB and respiratory diseases over the year and are contributing to the cause of tuberculosis. TB Association of India has always been announcing these awards during the conference which we are holding for so many years. Today is 75th Platinum Jubilee Conference of Tuberculosis Association of India. And on this occasion, it's a great pleasure for me as a trustee and executive editor of Indian Journal of Tuberculosis to announce these awards. The first award is of Dr. R.C. Jain Lifetime Achievement Award, which was instituted in 2011 in memory of late Dr. R.C. Jain, who served the Tuberculosis Association of India in various capacities for over 4 decades. The award carries rupees 25,000 in cash, a memento, and a certificate of honor. This award goes to Dr. B.N. Panda, who is a retired brigadier. Dr. Panda has been actively working in day-to-day management of tuberculosis patients in Indian Armed Forces at Military Hospital in Pune, and also he has been a driving force in RR Hospital for many years. Ladies and gentlemen, this is a great pleasure for me to announce this Lifetime Achievement Award for Dr. B.N. Panda, who is a retired brigadier. We go to the next award. The next award is Dr. P.K. Sen TI Gold Medal Oration. This was instituted in 1996 and is awarded to a senior TB and respiratory diseases worker who has made outstanding contribution to the cause of tuberculosis control. The oration consists of gold medal and a certificate of honor. This year, the medal is awarded to Dr. Rupak Singla, who is the head of the Department of TB and Respiratory Diseases, National Institute of TB and Respiratory Diseases, New Delhi. He did his MD tuberculosis and also did his DNB respiratory diseases and is actively involved in the researches in drug-resistant tuberculosis. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to present this oration award of gold medal and a certificate of honor to Dr. Rupak Singla. We go to the next award.
Next award is Dr. S.N. Tripathi Memorial Oration, which was instituted in 2011 in memory of Dr. S.N. Tripathi. Dr. Tripathi served in the cause of tuberculosis and respiratory diseases for over 4 decades. This year's award goes to Dr. Sudhir Prasad. He is a consultant pulmonary medicine and also is a secretary to the newly state of Telangana of TB Association. I have a great pleasure to announce for Sudhir Prasad this award, which carries rupees 10,000 in cash, silver medal, and a certificate of honor. Next award goes to Dr. Padma Priya Darshini, who is a director of ICMR, National Institute of Research and Tuberculosis, Chennai. This is a TI Oration Award, which was instituted in 1982, much earlier, and it was to commemorate the centenary of the discovery of the tubercle bacilli by Robert Koch. TB Association of India has generally awarded this award to very senior, eminent scientists for national and international doctors. Dr. Padma Priya Darshini is a director of National Institute of Research, Chennai, and this award is given for her excellent work for 19 years at the ICMR, where she had done a lot of research. The award consists of a silver medal and a certificate of honor. Next award is Charu Chanchal Das Memorial Award. This award is given to a very senior person who has contributed to the cause of tuberculosis. This year's award is given to Dr. U. N. Vidyarthi, Chairman, Patna State TB Association, Patna, from Bihar. And this carries the cash prize of rupees 25,000 and certificate of honor. Next award is Lupan TI Oration. This award was instituted in 1991, courtesy Messrs. Lupin Laboratories, and was given to the person who has done a lot of work in tuberculosis and respiratory diseases. This year's award goes to Dr. Rajesh Swankar. I think the photograph requires to be changed because Dr. Swankar is well known and he is also the secretary of the Indian Chess Society. The award carries rupees 15,000 and a certificate of honor. Next award is O.A. Sharma Oration Award, which was instituted in 2001, and it carries a award of 10,000 rupee cash and a certificate of honor. Can the organizer see that the photograph is changed? This year's award is given to Dr. Vishnu Sharma, who is a professor and head department in the Institute of Medical Sciences, Bangalore. Anyway, I think we give this, we have also to honor some of the senior members in the audience, the delegates which are there. And this is to be honored with a shawl. And the photograph that you see is of Raghu Rao, who is a Deputy Director Tuberculosis in Central TB Division. And this year planned that we will honor some of those workers, may not be the oration, but given the award to those persons who have contributed to the cause. And
earlier photograph. Can somebody put in who had that date now? We have also to honor another person who is a Dr. Yusuf Nasir, who is a cardiothoracic surgeon. Yeah, that's okay. Nasir Yusuf, who is a cardiothoracic surgeon in Kerala. And he has contributed a lot in providing operative surgery to the patients of tuberculosis. And therefore, it is an honor for TB Association of India to honor Nasir Yusuf with a shawl and a big hands from TB Association of India. Ladies and gentlemen, there's another award we used to give, and this year's best state in national tuberculosis elimination is given to the state of Gujarat, and Dr. Patel gets the prize and the certificate of honor, prize of ₹5,000. With these words, ladies and gentlemen, I come to the end of the awards ceremony and hand over the mic or hand over the stage to Neha again to carry out further the program. Thank you. Thanks a lot, Dr. Arora. And big congratulations to all our great and eminent awardees. Let's move ahead. We invite Professor Dr. Sunil Kumar, Director General Health Services, Government of India, and Chairman, Tuberculosis Association of India, to kindly come forward and address the audience. Sir, please. Respected dignitaries, technical and programmatic experts, senior colleagues, and my dear friends, a very good evening to all of you. I welcome you all to 75th National Conference of Tuberculosis and Chest Diseases being conducted virtually for the very first time. At the outset, I would like to congratulate the TB Association of India, the Madhya Pradesh Tuberculosis Association, and Mahatma Gandhi Memorial College, Indore, for taking an initiative to conduct this conference virtually. Even in these trying times, this dedication to move forward towards our goal is really commendable. I consider myself honored to be addressing such an august gathering at such an important event. With more than 8 decades of experience, the Tuberculosis Association of India is one of India's leading voluntary organizations working in the health sector. Throughout their vast network of members, this association has done tremendous work in advocacy, research, policy making, and implementation of the same. Tuberculosis is one of India's biggest public health challenges. It is estimated that India has a little more than 26 lakh tuberculosis patients in 2019. This translates to the highest burden of tuberculosis globally. The National TB Elimination Program has been working to prevent tuberculosis diseases, diagnose it timely, and to initiate timely and effective treatment. Adopting a patient-centric view, the program has also extending the nutritional and travel support to the TB patients across the country. Not only the public sector, but even the private sector has joined hands with NTEP in battling tuberculosis. Working hand in hand with Government of India, members of TB Association of India too have walked the talk in fighting tuberculosis. Even though significant progress has been made over the years, much more still needs to be done. What we need urgently are better and rapid diagnostic, including point-of-care diagnostics, shorter and more effective treatment regimen, which are injection-free and have lesser pill burden, use of artificial intelligence in diagnosis, surveillance, and monitoring, vaccines to prevent tuberculosis, and an overall patient support mechanism that holistically cares for
tuberculosis patients. And now, with our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji committing to end TB in India by 2025, 5 years ahead of the SDG goals, the responsibility of all of us has increased tremendously. I appeal to all the delegates of this conference, whether from government sector, the private sector, the NGOs, the corporates, or the general public, to come together and join hands to support each other in our fight against tuberculosis. I also take this opportunity to officially release the Platinum Jubilee Anniversary Special Issue of Indian Journal of Tuberculosis. I hope the studies cited in this prestigious journal adds to the knowledge and understanding of tuberculosis and other respiratory illnesses. Once again, I extend my welcome to all the participants and delegates. It is my sincere wish that we have a fruitful discussion over the course of this conference and take back the useful learnings and knowledge to serve the citizen of our country in a much better manner. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good night. Thank you, sir. The Tuberculosis Association of India brings out a very prestigious quarterly journal, the Indian Journal of Tuberculosis. This journal is the official organ of Tuberculosis Association of India. This journal is one of the most internationally acclaimed journal for tuberculosis. We thanks our guest of honor, Director General Health Services, Government of India and Chairman Tuberculosis Association of India, Honorable Professor Dr. Sunil Kumar, to release this issue. To release this special Jubilee Platinum Anniversary issue of this Indian Journal of Tuberculosis. I request to kindly show the pic. Unmute, Neha, unmute. Thank you to Dr. Professor Sunil Kumar and thank you to Dr. V.K. Arora for making this release possible. This special Platinum Jubilee issue and the anniversary issue of the Indian Journal of Tuberculosis is free to download online through the link given below for 1 month only. Kindly copy the link to download this issue. Kindly note that this link is also available in our resource center. Time has come for the most awaited inauguration of 75th Platinum Jubilee of NATCON 2020 by our chief guest, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Honorable Dr. Harshvardhan sir. Sir is also known as the Doctor of the Last Decade, Swasth Ratna, an ENT surgeon with long and distinguished record of public services, leaving his incredible mark in all the fields of activities undertaken, may it be health, education, law, science and technology, or even environment. As the country's health minister, Sir's proactive handling of the ongoing COVID-19 crisis has helped India to keep the spread of the pandemic to the minimum. This exemplary work in combating the pandemic in our densely populated country has won him applause. We are proud to share that this year, Sir is elected to the office of Chairperson of Executive Board of the World Health Organization. Welcome you, Sir, to address the audience and the dignitaries.
A very good morning to all the esteemed delegates, distinguished technical and program experts, representatives of non-governmental partners working in health, ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure to address all of you on the Platinum Jubilee of the National Conference of Tuberculosis and Chest Diseases. At the outset, I would like to extend my heartiest congratulations to all the members of the Tuberculosis Association of India. Established in 1939, it is one of the oldest and largest voluntary organizations in the country whose members have worked tirelessly in the field of tuberculosis and respiratory health over the past 8 decades. I especially congratulate all organizers and members of the Madhya Pradesh Tuberculosis Association and staff and students of the Mahatma Gandhi Memorial College Indore for hosting the 75th NetCon virtually in these trying times of COVID-19 pandemic. In fact, your determination is an inspiration to public health workers all across the country and assures me that India's TB warriors are always ready to fight tuberculosis come what may. India has been making significant advances under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make tangible changes to the health indicators across the board. In the course of the last few years, our government has launched programs that are unprecedented in terms of their scale and reach. These ambitious steps are testimony to our sincere commitment towards a healthy and more productive India. TB continues to be one of India's most critical health challenges, which may have devastating consequences for the patients, their families, and communities. With an estimated 26.4 lakhs TB patients, India has the largest burden of TB globally. Detecting all these 26.4 lakh TB patients would be the first step in initiating their treatment and care. In 2019, we could detect 24 lakh TB patients in the country, meaning that we had less than 2.4 lakh missing TB patients. This was made possible only with the dedicated work done by all of you. With nearly 7 lakh TB patients being notified by the private sector in 2019, they too have been making huge contributions towards our efforts to end tuberculosis. The National Tuberculosis Elimination Program has advanced leaps and bounds in the services being provided for tuberculosis. With more than 21,000 microscopy testing centers and more than 3,000 molecular diagnostics, the country has seen a great jump in testing capacity. We now have at least one molecular diagnostic facility available in each district and are aiming to decentralize it down to the block level. It has always been our earnest endeavor to provide to our patients the latest evidence-based and internationally recommended treatment. With this approach, we have introduced all oral regimes and new drugs such as bedaquiline and delamanid for effective treatment of drug-resistant tuberculosis. Our health system not only focuses on the detection and treatment of tuberculosis disease, but also tries to address all comorbidities and social determinants of TB patients. Through the Nikshay Poshan Yojana, nutritional support is extended to all TB patients for the entire duration of their treatment. Till date, more than 886 crore rupees has been disbursed to TB patients as direct benefit transfer for nutritional support. In addition to managing tuberculosis disease,
We are also rigorously working towards prevention of the disease. Much focus is being given to airborne infection control in hospital wards and outpatient waiting areas. The program already has the provision of chemoprophylaxis against tuberculosis disease in pediatric contacts of TB patients. We shall soon be expanding TB preventive treatment for the adult contacts of TB patients. Through the India TB Research Consortium and through numerous operational researches on tuberculosis, we continue to generate evidence-based best practices for managing tuberculosis. In fact, many of these studies are undertaken by the delegates at this meeting, and the findings of some we shall see over the course of the next 3 days of this conference. Many innovations, including the use of artificial intelligence, are being explored by the TB program for further improving the care of TB patients. India was well on its way to achieving our ambitious goal of ending tuberculosis by 2025 when the world was hit by the COVID-19 pandemic. This disease, with symptoms very similar to that of tuberculosis, caused some setback to our efforts. With the country coming to a halt due to the lockdown, essential health services faced a blow. Movement and transportation were affected, and many patients could not get tested. Many others were apprehensive of the dual stigma of tuberculosis and COVID. Although there has been a reduction in TB notification compared to the notification in the same period last year, I am glad to say that timely mitigation measures were taken by the government and dutifully implemented by all of you, our TB warriors. Our treatment success rate is still fair at around 81%, and public health action to regain lost ground is ongoing. TB continues to be the top priority of the government, and even through these trying times, we have launched a Jan Andolan to end tuberculosis along with the various institutes and partner organizations working in tuberculosis. The government has also taken several steps to combat the COVID pandemic. We have deployed multi-platform molecular technology devices for the detection of COVID, earmarked COVID-dedicated hospitals with specialized services such as ventilator facilities to cater to COVID-19 patients, instituted protocols for testing, treatment, quarantine, surveillance, and containment, and ensured supply of essential protective gear such as N95 masks, PPE kits. We are leading vaccine development efforts, and the government has also ramped up supply chain infrastructure for fair and equitable distribution of the vaccine as soon as it is available. Even during the pandemic, we have not lost focus of other respiratory conditions. The government is also working extensively to address the issue of tobacco use in the country. The prevalence of tobacco use has reduced by 6 percentage points from 34.6% in 2009-10 to 28.6% in 2016-17 as per Global Adult Tobacco Survey. Much still remains to be done to ensure good respiratory health for all Indians, and this includes a clean, pollution-free environment and access to good quality care with minimal out-of-pocket expenditure. Ayushman Bharat is the platform with the world's largest health insurance program and caters to more than 50 crore Indians. Core strategies with a 360-degree approach are being used to expand the reach of its universal health coverage to ensure
access to quality health care for every citizen of India. The vehicle for implementation of quality health care for all is the National Health Policy Framework, with increased budgetary allocations for health focusing on technological approaches, which would help in laying down stronger and robust foundations. In fact, the concept of holistic health is the need of the hour, where we need to not only think of early diagnosis and treatment, but also focus on preventive aspects. Besides the focus on health, the government is also committed to improve other social determinants of health in the country. As a step forward in this regard, the Government of India has scaled up its programs for rural and urban housing under the Pradhan Mantri Awas Yojana. Also, the government has scaled up rural and urban sanitation programs and schemes like Ujjwala Yojana for bringing clean cooking fuel in order to reduce indoor air pollution, which will reduce vulnerability to all respiratory diseases, particularly tuberculosis among women and children. This is a perfect example of a comprehensive healthcare approach and will also hugely benefit us in our commitment to end tuberculosis by 2025. I would like to thank all of you for giving me the opportunity to address this esteemed gathering. It goes without saying that in our efforts to improve the health of our fellow countrymen, we all need to join our hands. Every stakeholder, whether from the public sector, the private or the corporate sector, must come together to help rid India of the infectious disease of tuberculosis. On this positive note, I officially inaugurate the 75th National Conference of Tuberculosis and Chest Diseases. I take this opportunity to invite you all to join me in our Andolan against tuberculosis. And let's take the pledge, TB हारेगा, देश जीतेगा. Thank you, Dr. Harshvardhan, sir, for your promising words, all hard work and your support ever. And rightly said that together India will definitely win the fight against tuberculosis and infectious diseases. Let's move ahead. It's my pleasure and pride to welcome Dr. Salil Bhargav. Dr. Salil Bhargav is heading the Department of Pulmonary Medicine, MGM Medical College, Indore. Dr. Bhargav has shown exemplary work throughout his career, including this COVID pandemic. This 3D virtual conference was totally a new venture for all, but has surpassed the various challenges posed by COVID-19. Dr. Bhargav has toiled hard for months, and hence this conference is a huge, huge success with more than 2,500 attendees and more than 450 eminent speakers. I invite Dr. Salil Bhargav to kindly give the vote of thanks. Dignitaries on the dais and dear delegates attending NetCon 2020. मैं अभिभूत हूं कि इस महान राष्ट्र के स्वास्थ्य क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर सुशोभित जो स्वयं एक कुशल चिकित्सक हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो स्वयं हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे विचार से भारत में चिकित्सा क्षेत्र के किसी भी कार्यक्रम के लिए इनसे श्रेष्ठ कोई और मुख्य अतिथि ही संभव नहीं है। मैं नेटकॉन की टीम के सभी सदस्यों की ओर से माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का हृदय से नमन करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में से इस कॉन्फ्रेंस में अपनी गरिमामय उपस्थिति संभव की। मध्य प्रदेश सरकार में तरुण ऊर्जा के पर्याय माने जाने वाले राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी की उपस्थिति भी हमें गौरवान्वित कर रही है। आप जैसी हस्तियों की उपस्थिति विकट परिस्थितियों में निर्भीकता से अग्रसर होने की प्रेरणा हमें प्रदान करती है। आपकी शुभ उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
My sincere thanks to our Director General Health Services, Dr. Sunil Kumar ji, for your all support, guidance and blessings. He is also our Chairman of TB Association of India. My sincere thanks to Dr. K.S. Sachdeva, DDG TB and his team, CTD full team, who has guiding us, supporting us at every step in organizing this conference. साथ ही में WHO की हमारी जो पूरी टीम है, जो हमारे को लगातार इस पूरे प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही है, मैं उन सबका आभारी हूँ। हमारी टीम के प्रणेता और मुखिया श्रद्धेय श्री वीके अरोरा सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे विषय के वरिष्ठ और प्रज्ञ विद्वान हैं और हमारे सतत प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आपने हमें हर कदम पर चलना सिखाया है, इस कॉन्फ्रेंस को कैसे ऑर्गेनाइज करना और कैसे इसे सफलतापूर्वक आगे ले जाना। मैं आभारी हूँ हमारे डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर अशोक वाजपेयी, डॉक्टर मनोज जैन और हमारी सभी इंटरनेशनल और नेशनल फैकल्टी जो इस कॉन्फ्रेंस में पधारी है और जिन्होंने आज सारी 12 वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ सब मीडिया के सभी साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाकर हमें अनुग्रहित किया है। और अंत में मैं उन लोगों का आभार जरूर करना चाहूंगा जो जिनका कोई विकल्प नहीं है। टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जो लगातार हमारे साथ रही, ऑफिस हमारे साथ रहा, एमपी स्टेट टीबी एसोसिएशन, क्षय पीड़ित सहायक संघ इंदौर और इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य, मेरे विभाग के मेरे सभी साथीगण और विद्यार्थी जिनके अथक प्रयासों की गणना करना असंभव है और जिनके समर्पण के बिना ये कांग्रेस हो नहीं सकती थी। साथ ही हमारी टेक्निकल टीम और जो हमारे इवेंट की टीम है जिन्होंने इतना सुंदर टेक्निकल प्लेटफॉर्म 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया है जो लगभग नेचुरल या वर्चुअल से हटकर फिजिकल जो लगता है वैसा लग रहा है। मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। सभी को सादर वंदन, अनेक आभार, नमस्कार। Thank you, sir. I wish that all of us will witness, realize, praise, and appreciate this 3 days incredible feast of knowledge on this virtual platform. We now move forward to end this inaugural ceremony by our national anthem. आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी देश की वंदना करें. Let us all stand together and salute our nation. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thanks to each and every one of you. Thanks for being here today with us and helping us to shape this gala event. Stay home, stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. With this, we end this session.